दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है आपके पास अगर ऐसा एक एआई हो जो मतलब यार कभी भी आपको बाय चांस अगर एक टिकट बुक करना है, फॉर एग्जांपल एक ट्रेन की टिकट अगर वो अवेलेबल होगी तब आपको बुक करना है तो आपको तो पता नहीं होगा। लेकिन यार दोस्तों, आपके पास एक ऐसा एजेंट हो जिसे पता हो कि अगर ट्रेन की टिकट अगर अवेलेबल हो जाती है तो डायरेक्टली इमीडिएटली वो मतलब यार उस टिकट को बुक कर दे आपके लिए। और दोस्तों, आपको अगर मतलब यार आपका एग्ज़ाम हो और अगर आपको मतलब यार उस एग्ज़ाम की डेट आ गई फॉर्म फिलअप करने की, तो एज सुन एज जैसे वो डेट आ गई तो आप इजीली उसे फिल कर पाओ। तो ऐसा एक एजेंट आपके पास हो तो क्या करोगे? तो दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाला एक ऐसा एजेंट जो मैं आपको दिखाऊंगा और कैसे वर्क करता है वो भी बताऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देर किए। तो दोस्तों, बात करें तो रिसेंटली दोस्तों ओपनएआई ने लॉन्च कर दिया अपना एक न्यू एआई एजेंट। दोस्तों, एआई एजेंट मतलब यार वो एक लूप में वर्क करता है, लेकिन उसके अंदर मतलब यार एक ऐसा फीचर ओपनएआई ने ऐड कर दिया जिसका नाम है दोस्तों ऑपरेटर एआई एजेंट। और दोस्तों, ये ओपनएआई ने बिल्ड किया, तो आप सबको तो पता है ओपनएआई ऐसी कंपनी है जिसने ChatGPT बिल्ड किया था सबसे पहले, और एक एआई एजेंट में भी सबसे पहले आ गई है। तो दोस्तों, आप सोच ही सकते हो तो कितना ओपी सा होगा। तो चलिए आपको एक डेमो दिखाता हूँ इसी एआई एजेंट के मॉडल का जो ओपनएआई ने मतलब यार रिसेंटली वीडियो में लॉन्च किया, और उसमें मतलब वो लोग अपने को ट्रायल दिखा रहे हैं। तो इंग्लिश में होगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी इसे फर्दर कर दूंगा आगे चल के। So this is the operator homepage. It's at live.operator.chatgpt.com. It'll be accessible as soon as the live stream is over. And as you can see, the interface is very similar to ChatGPT. You can type in a prompt and an operator will try to execute the task to the best of its capability. You'll also see we have a list of pre-filled prompts here. These are not really meant to be recommendations. These are meant to be things that, to give you an idea of what operator can do. We have also collaborated with various brands like OpenTable, AllRecipes, StubHub, Uber, Thumbtack, DoorDash, eBay, Target, to make sure operator really works well on these websites. But also, we think users will find operator very valuable in interacting with these platforms. So with that, let's jump in with a demo. Okay, so I'm gonna start with something fairly simple. I'm gonna use OpenTable and say, book me a table for 2 at Beretta tonight at 7 p.m. Okay. And so you specifically chose OpenTable. Yeah, in this case, I'm asking operator to use OpenTable to book a table for 2 at Beretta. Beretta is a restaurant in San Francisco. It's great, you should try it out. And at 7 p.m. And I'm using OpenTable in this case, but I could have easily said, just do Beretta, and it would have probably gone to search engine, figured out how to make a reservation as well, but let's see what it does. So can you explain what's happening in this? Yeah, right. So I'm gonna expand this a little bit. So as soon as I typed in the query, operator instantiated a completely remote browser. This browser is running in the cloud somewhere, and as you can see, it's already up and running. And my hands are off the keyboard. I'm not typing these things. So this is just the AI's clicking around. Yeah, it's just clicking around. It started this browser session. It knew where OpenTable website is, which is opentable.com. As you can see, it's summarized chain of thought here as well, which is it's gone to the URL, searched for Beretta, and something cool really happened, which is for some reason, OpenTable thought we were in Virginia, and it auto-corrected itself to San Francisco. This is using, so like ChatGPT, in Operator, you can also give custom instructions. So I'm gonna show this really quickly here. Okay. So I've given a custom instruction that for queries that need it, I live in San Francisco. So operator recognized that and then auto-corrected itself to go to Beretta. Okay, looks like 7 p.m. isn't available, but you know what? 7:45 is just fine. So we're gonna go do that. So in this case, operator came back, and this is a really good example of task delegation where operator needs help or needs assistance or just wants to ask you something. It'll just come back and you answer that So query. in practice, you wouldn't have had to watch this. You could have just let it go off while you're doing other things, then it would come back and say, hey, I can't do 7:45. Yeah. And we're starting with a web app. You'll get notifications, etc. When operator moves into mobile, you'll get mobile notifications, much like interactions we do with general apps. Okay, yes, that's great. Let's do it. Okay, so again, very simple interaction as you would have with an assistant, which is, hey, I found a reservation, 7 p.m. wasn't available, let's do 7:45. And again, you can see operator at this point has said, okay, should I? Again, this is a really good example of the confirmations work we're going to talk about a little bit later, but
before doing an action which is sort of irreversible in this case, you can cancel the reservation obviously, but again, taking a critical तो चलिए action. दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ उस वीडियो के बारे में। तो दोस्तों उस वीडियो में क्या हुआ, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे AI से रिलेटेड वीडियोस मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए लाते रहता हूँ। तो दोस्तों बात करें तो ओपन के डेवलपर ने वहाँ पर दिया एक प्रॉम्प्ट। दोस्तों प्रॉम्प्ट में उन्होंने बताया कि मुझे यार मतलब यार ओपन टेबल पे मतलब यार एक उन्हें क्या ओपन टेबल नाम की एक वेबसाइट, उस पर मतलब यार एक मुझे मतलब एक डिनर टेबल मुझे बुक करके चाहिए। तो मेरे लिए जैसे उसने प्रॉम्प्ट दिया तो मतलब ये वो जो ऑपरेटर एजेंट है उसने क्या किया, उसके पास एक खुद का एक वर्चुअल मतलब यार ब्राउज़र है, उस ब्राउज़र में उसने सर्च किया और फिर बाद में उस सर्च में मतलब यार जो सांस फ्रांसिस्को है वहाँ पे मतलब यार उन्हें टेबल चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया, मतलब यार जो मॉडल है उस मॉडल ने क्या किया, उस वेबसाइट को ओपन किया, मतलब ओपन टेबल नाम की वेबसाइट को ओपन किया। फिर बाद में वहाँ पे मतलब उसने सर्च किया अवेलेबल है या फिर नहीं, तो वहाँ पे अवेलेबल था। टाइमिंग आपको शो हो गया होगा 7 PM को। तो मतलब आप सोच ही सकते हो मतलब यार ये मॉडल किस तरीके से वर्क करता है। और इसी तरीके से इन फ्यूचर आप भी अपने मतलब यार टिकट्स या फिर क्वेश्चन या फिर एग्जाम पेपर्स बुक कर पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक